अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेडिंग। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एल्गो ट्रेडिंग। ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट देख लें और आप एल्गो ट्रेडिंग के बारे में मज़ीद जान सकें। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियो से आगाह रह सकें और आप ट्रेडिंग के बारे में जान सकें और ट्रेडिंग की फील्ड में एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें और ट्रेडिंग के ज़रिए से आप खुशहाल हो सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेशनल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यानी कि रेशनल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या है। नंबर वन पर जो पॉइंट है वो है मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दिस hypothesis states that any factor that can affect a stock's price, fundamental, political, psychological, or otherwise, is fully. This hypothesis states that any factor that can affect a stock's price, fundamental, political, psychological, or otherwise, is fully reflected in that stock's price. In other words, prices reflect changes in supply and demand. For example, if prices are rising regardless of the reason behind it, demand should exceed supply and therefore fundamentals should accelerate. Conversely, if prices fall, fundamentals should be bearish. Therefore, as a rule, technicians are not interested in the reason for high or low prices. If everything that affects market prices is ultimately reflected in the market price, it stands to reason that the market price study is important. That is why this assumption is considered as the cornerstone of technical analysis work. प्राइस मूव इन ट्रेंड्स यानी कि प्राइस का जो मूव हो रहा है वो अफेक्ट करता है ट्रेडिंग को। Unless one accepts that markets are in fact trending, there is no point in reading further given the assumption that prices move in trends. We conclude that a changing trend is more likely to continue. Just like Newton's first law of motion, all following trends are based on riding the current trend unless a reversal sign appears. नंबर थ्री पर जो पॉइंट है वो है हिस्ट्री रिपीट्स itself. Under this hypothesis, it is believed that the key to understanding the future lies in the studying the past. Charts create patterns that have occurred in the past, so analyzing historical patterns help predict future market movements. What is fundamental analysis? The fundamental analysis approach examines all relevant factors that affect a stock's price to determine the intrinsic value of that stock. Here, the term intrinsic value refers to the actual price of a stock based on the law of supply and demand. If the intrinsic value is lower than the current market value, it means that the stock is overvalued and should therefore be sold. Conversely, if the intrinsic value is higher than the price, the market is undervalued and the stock should be bought. Rationale of fundamental analysis. One of the basic assumptions of the fundamental analysis is that the current price in the stock market often does not fully reflect the value of the company. Thus, the fundamentalist looks at publicly available information and other economic data about company to understand the company ability to produce products
and services, and to assess whether it is making profits in a productive manner. His approach stems from the assumption that reported financial information is fair and accurate. A fundamentalist may also assume that a company past performance and metrics can continue into the future. आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियो से आगाह रह सकें और आप ट्रेडिंग के बारे में जान सकें। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।